Today we are starting chapter chemical energetics. अच्छा, कुछ बुक्स में इसका चैप्टर का नाम आपको एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स भी मिलेगा. अच्छा जी, देखो जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे हैं अभी पीछे वाले चैप्टर्स में भी, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस. तो मोल्स के चैप्टर में हमने ये वाले रिएक्शन की इक्वेशन बहुत बार देखी है. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसकी वो कहलाती है रिएक्टेंट्स, and right hand side of the equation is known as products. अच्छा, रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं मॉलिक्यूल्स देखूं तो वी हैव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. नाइट्रोजन की जो हमने बॉन्डिंग देखी थी, two nitrogen atoms make triple covalent bond with each other because nitrogen is from group 5. Nitrogen atom has 5 electron in its outermost shell. Nitrogen atom needs 3 more electrons to complete its octet. So each nitrogen atom makes 3 covalent bonds. Similarly, in hydrogen molecule, each hydrogen atom make 1 covalent bond. So 2 hydrogen atoms make each 1 covalent bond with each other. There are 3 moles of hydrogen molecules. But ammonia bonding, yaad hai, 9 hydrogen, each nitrogen makes 1 covalent bond. So there are 3 hydrogen atoms altogether. So there will be 3 covalent bonds like this. अब अगर आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे we have nitrogen nitrogen bond and hydrogen hydrogen bond, and right hand side of the equation has nitrogen and hydrogen bonds. तो पहले हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना. जब नाइट्रोजन एटम्स अलग होंगे और हाइड्रोजन एटम्स अलग होंगे, देन दे कैन मेक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसा ही है. Sir, because we have N2, there's 2 nitrogen. Yes. In covalent bonding we studied N2 means 2 nitrogen atoms covalently bonded with each other. So if it was N3, there would be 3. Actually, N3 does not exist. Like example. There is no such molecule as N3. Example. But if no, that depends upon the atom. Nitrogen is from group 5, and group 5 elements have 5 electrons in their outermost shell. They need 3 more electrons to complete their octet. I have written electronic configuration of nitrogen on the top. So this 2,5. Yes. It needs 3 more electrons to complete its octet. So it makes 3 covalent bonds. Nitrogen always makes 3 covalent bonds. Actually, N3 does not exist. But let's say if you have any other molecule like Cl2, there are 2 chlorine atoms, but each chlorine atom makes only 1 covalent bond. So there will be only 1 covalent bond in between chlorine atoms. Sahi hai? Okay, so chlorine has 7 electron in its outermost shell. It is 7. From group 7. So it needs 1 more. So it only needs 1 covalent one bond. more electron. So it will make 1 covalent bond. Okay, I understand. The point is, at the reactant hand side, we have to break the bonds between atoms. At reactant hand side, there is always bond breaking. जैसे आपने वो खेला होगा ना बचपन में, लेगोस जो होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको if you want to make a new shape, you have to break or you have to detach all the blocks, then you make another block. सब दोबारा से पहले निकालते हो फिर दोबारा से जोड़ते हो. Similar यहाँ पे भी हो रहा है. If you want to make a new molecule, you have to break the existing bonds in between nitrogen atoms and hydrogen atoms. Nitrogen hydrogen अलग अलग होगा तभी तो वो nitrogen hydrogen bond बनाएगा ना. अभी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना हुआ है साथ. पहले ये टूटेगा, नाइट्रोजन एटम निकलेगा यहाँ से, फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. Hydrogen just makes 1 covalent bond.
Hydrogen makes one covalent bond because hydrogen atom has one electron in its outermost shell, and in order to get stable, hydrogen needs only one more electron. It just makes one covalent bond. Is it necessary to write the 3 on the left side? ये तो बैलेंस किया है ना इक्वेशन को, for 3 moles लगाए, because at the right hand side you have to choose 6 hydrogen. In order to balance it, you have to write 3 moles with hydrogen. Okay. Okay. So at the reactant hand side there is bond breaking, and the product side there is bond formation or bond making. So bond breaking के लिए how do we break bonds? We give heat energy. So heat energy at the reactant hand side is absorbed for bond breaking. किसी चीज को तोड़ना है तो heat energy देनी पड़ेगी. And when bonds are formed at the product hand side, here heat energy is released. Heat energy is released for bond making. Got my point? You have to supply heat energy to break the bond, and when bonds are formed, they release the heat energy. So I have a question. G. Can you explain to me like what's the 2H and then one covalent bond and one covalent bond H on the right side? मोल्स नहीं पढ़ा हुआ क्या तुमने? I did, but I don't understand the, what do we say, covalent bond breaking. No, you want me to explain you how we have balanced the equation, or you have no problem in making covalent bond? Yeah, covalent bond. You see, you wrote 2H and then a line, one covalent bond, and one more line H. Okay. Because nitrogen atom makes 3 covalent bonds as it is from group 5. Yes. So in a molecule where we have 2 nitrogen atoms, so each nitrogen atom makes 3 covalent bonds. A molecule में सिर्फ 2 nitrogen atoms ही हैं, so they have to make covalent bonds with each other. There is no other option for them. आपस में इनको covalent bonding करनी पड़ेगी. So they will make 3 covalent bonds with each other. Okay. Whereas hydrogen only makes 1 covalent bond. So in a molecule of hydrogen H2, we have 2 hydrogen atoms, so they have to make 1 covalent bond with each other. Whereas in ammonia, we have 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. So yes. Nitrogen makes 3 covalent bonds, and each hydrogen can make only 1 covalent bond. So if one hydrogen makes 1 covalent bond, it cannot make more than this. एक ही bond बनाएगा. But we have 3 hydrogen atoms, huh? So another hydrogen atom will make another covalent bond with nitrogen, and another hydrogen atom will make another covalent bond with nitrogen. So altogether, one single nitrogen has made 3 covalent bonds. जो उसको 3 बनाने थे वो उसने बना लिया. And each hydrogen atom is making only 1 covalent bond. There are 3 hydrogen atoms in the formula. Yeah, I got it. That's all? Got it? That's all you have to do? For the covalent bond. You're asking something? That's all we have to do for the covalent bonding? Yes. Okay. Thank you, sir. Acha. So, but it's more than that. If you haven't studied covalent bonding, please remind me after the class. I'll send you the recorded lecture for how to make a covalent bond. We studied in 2nd chapter. Okay, thank you, sir. Acha. So, हम बात कर रहे थे, at the reactant hand side, we always have to break the covalent bonds or break the bonds at the reactant hand side. So heat energy is always supplied when we need to break the bonds, and when the bonds are formed during bond making, heat energy is released. मतलब बाहर आती है heat energy. Let's say, मतलब in every reaction at the reactant hand side, you have to break the bonds, and at the product hand side, bonds are always formed. So at the reactant hand side, heat energy is always absorbed, and at the product hand side, heat energy is always released. यहाँ तक बात क्लियर है? उज़ैर, समरा, सहर, मूसा, मिशल, हबीब, हिबा, बिलाल,
Yes, आगे sir. बढ़े Yes, यहाँ sir. से, जी सर। पक्की बात है? चलो अच्छा, अब it depends on a chemical reaction. In some chemical reaction, heat energy required to break the bonds or heat energy absorbed to break the bond is greater. If heat energy absorbed during bond breaking is greater than, this is the sign for inequality, ठीक है, is greater than heat energy released during bond making, then for example, let's say in some particular reaction, the heat energy absorbed is of 100 joules. Energy का unit तो पता है ना, it is joules. At the reactant end side, in order to break the bonds between reactants, you have to supply 100 joules of energy. And when the bonds are formed at the product end side, the energy released is only, let's say, 30 joules. So these are 100 examples. joules की, sorry, this is an just example. Okay. Just an example. So 100 joules की heat energy absorb हुई है, अंदर चली गई सिस्टम में. सिस्टम क्या है? जिसमें bonds break और bond form हो रहा है, reactant और product जिसमें. So 100 joules of energy has been absorbed and 30 joules of energy is released. So we can say the resultant amount is 70 joules which has been absorbed. और जो energy absorbed होती है उसको हम positive लेते हैं. 100 अंदर गई, 30 वापस बाहर आ गई, तो we can say ना 70 अंदर गई. Instead of saying 100 absorbed हुई है, we can say 70 joules of energy has been absorbed because 30 joules of energy is also released. Yes, sir. Okay, so such a reaction in which net amount of heat energy is absorbed, those reactions are known as endothermic reactions. So do we copy And this? कभी नहीं किया था? Yeah, you have to copy this. I copy this, but do I copy the heat energy absorbed is greater than? Yes, of course. Okay. Such a reaction where more heat energy is absorbed for bond breaking and less heat energy is released during bond making. Such a reaction is known as endothermic reaction. Endo means inside. So more energy has gone inside as compared to the energy that has been released. Done? So if the heat energy absorbed is greater than the heat energy released, it's exothermic. It's endothermic. Endo and opposite is exo. Yes, opposite is exothermic. Okay. And what are exothermic reaction? When heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond making. So those reactions are known as exothermic reactions. Okay, sir. Let's say if 200 joules of energy has been absorbed and 300 joules of energy has been released. Net amount of heat energy of 100 joules is released. So जब release होती है energy तो उसको हम value देते हैं negative. And such reactions are known as exothermic. Exo मतलब exit.
लिख लिया, आगे बढ़े। Done, sir. ओके, अच्छा इसका क्वेश्चन बना के लिख लो। इसको ना ये अक्सर एग्जाम में पूछ रहा होता है। explain why reaction is एंडोथर्मिक। इसका आंसर है More heat energy absorbed than released. yes. During a chemical reaction, heat energy absorbed during bond breaking is greater than heat energy released during bond breaking. Such a reactions are known as endothermic reaction. And another question is explain why a reaction is exothermic. So during chemical reaction, heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond breaking. Such a reaction is known as exothermic reaction. कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? ये लिख लो अपने पास। One second, sir. Let me copy.
Done. एक सेकंड सर। Yes, sir. Done. चले आगे। Okay, sir. अच्छा, we have one term which is known as enthalpy. So, enthalpy basically क्या होता है? Let's say if you have any substance, हमारे पास कोई भी substance है, वो अभी chemically react नहीं कर रहा, तो उसका जो एनर्जी कंटेंट है ना उस सब्सटेंस में, जैसे पेट्रोल रखा हुआ है एक बॉटल में, तो पेट्रोल में अभी एनर्जी कंटेंट कितना है, वो उसका इंथैल्पी होता है। लेकिन जब आप पेट्रोल को बर्न करते हो तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज अ केमिकल रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन पेट्रोल रिलीजेस एनर्जी, तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पेट्रोल लेकिन रिएक्ट होने से पहले, बिफोर बर्निंग, उसका जो एनर्जी कंटेंट है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी, and we define enthalpy by total energy content of any substance and symbol we use for enthalpy is H, and the unit for enthalpy is kilojoules per mole. Kilojoules is the unit for energy, and per mole means 1 mole. Let's say if we are burning 1 mole of petrol, so how much energy will be released? That would give its enthalpy. But we are more interested when the petrol or any substance reacts, because जब भी substance react करेगा, तो either it will release energy or absorb energy. Either its reaction will be endothermic or exothermic. So this is defined by another term which is known as enthalpy change. इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज द हीट एनर्जी absorbed or released during a chemical reaction. The symbol for enthalpy change is del H. This triangle जो बनाया ना, इसको हम कहते हैं del. This shows change in anything. Change in enthalpy. It is read out like this: change in enthalpy or enthalpy change. Depending over the reaction, some reactions are endothermic, in which heat energy absorbed is greater than heat energy released. And some reactions are exothermic, in which heat energy absorbed is less than heat energy released.
for those reaction which are endothermic, its enthalpy change is always a positive value. Its enthalpy change is always positive for endothermic reactions. And for exothermic reactions, enthalpy change is always negative value. अब कोई वैल्यू होगी, लेट्स से एंडोथर्मिक की हमने एग्जांपल के तौर पे कोई +50 किलो जूल्स पर मोल लिखा हुआ है, तो प्लस मींस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. But let's say if it is -75 kilojoule per mole, the negative sign shows that the reaction is exothermic. And now you know what we meant by endothermic and exothermic reaction. Endothermic reactions are those in which heat energy absorbed is greater than heat energy released. तो इसको आप इस तरह से दोबारा से लिख लो कि heat absorbed is greater than heat released. Whereas in exothermic reaction, heat absorbed is less than heat released. वालेकुम अस्सलाम जी अली, पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर, बस सलाम कर. ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम. यस, यू जस्ट जॉइंड राइट. हमने ना अभी केमिकल एनर्जेटिक स्टार्ट किया है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला चैप्टर. जी सर जी. ओके ओके. चले आगे बढ़े. लिख लिया यहाँ तक सबने? गाइस चले आगे बढ़े. ओके Sir, what is positive VE and negative VE energy? enthalpy change. Okay. What is the triangle H? This Delta. is enthalpy change. Del H is enthalpy change. ये लिखा है ना ऊपर. Del H is the symbol for enthalpy change. And instead of writing enthalpy change, we will just use the symbol del H. And VE? It is for positive. VE Okay. for positive. आगे बढ़े. देखो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. पहले आई गेस पहले नहीं आ रही थी. पूछना है? नहीं सर, बस चेक कर रहा हूँ. Okay.
देखो अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरह से लिखे हुए होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब ये रिएक्शन होगा ना, तो दिस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन किस तरह से होता है, लेट्स से इफ वी हैव a container or a cup and if we add hydrochloric acid into sodium hydroxide, और इसमें ना हमने एक थर्मामीटर डाला हुआ है। You guys know what thermometer does? ठीक है, it measures temperature. Right? अच्छा, तो होगा क्या when we mix HCl and sodium hydroxide together? So this reaction is exothermic, and enthalpy change for this reaction is, usually the enthalpy change is written at the end of the equation like this. Enthalpy change for this reaction is minus 58 kilojoule per mole. Means whenever this chemical reaction happens, energy of minus 58 kilojoule is released. जब एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग इंक्रीजेस। अब सराउंडिंग क्या होता है, देखो हमारे पास ये जो सिस्टम, जो बीकर है या जो कप है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो हीट एनर्जी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये माइनस 58 किलोजूल पर मोल की एनर्जी दी हुई है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। Why? Because enthalpy change is in negative. तो हीट एनर्जी या हीट एनर्जी को ना हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। हीट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज thermal energy. So heat energy during this reaction is released because it is an exothermic reaction. ज्यादा absorb कम हुई थी, release ज्यादा हुई है, तो net amount तो release हो रहा है ना। और जब heat energy release होती है तो जो थर्मोमीटर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। सही है, तो ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बात समझ आई ये वाली? तो इसको हम ये कहते हैं, देखो अब इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम। एक टर्म होती है सिस्टम और एक टर्म होती है सराउंडिंग। जैसे लेट्स से ये मेरे पास बीकर है। बीकर इज अ apparatus that we use in chemistry lab, and इस बीकर में we have some sodium hydroxide and we have added hydrochloric acid to it. ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब इसका सिस्टम क्या है, देखो जो इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो दीज आर नोन एज सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली अंदर ही हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो भी चीज है ना, जैसे इसमें पानी में रिएक्शन हो रहा है वाटर में, तो वो वाटर और उसके बीकर के सराउंड आसपास जितनी भी चीज है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। समझ आई ये बात? जी सर। जी सर। अच्छा, अब होता क्या है कि ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस। ड्यूरिंग exothermic reaction, heat energy is released, so
temperature of surrounding increases. अच्छा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, अब हम ना रिएक्टेंट का रिएक्ट होने से पहले जो एनर्जी कंटेंट था उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी चेंज नहीं, इंथैल्पी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कंटेंट। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स उसको हम लिख रहे हैं HR से। तो इट इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन। बट व्हेन these reactants have reacted to form products, अब प्रोडक्ट बन गया है, ये रिएक्टेंट तो खत्म हो जाएंगे ना फिर, और ये रिएक्टेंट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में। तो उसको फिर हम कहेंगे, प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और उसको हम लिखते हैं HP से। एंड प्रोडक्ट कब बनते हैं? आफ्टर रिएक्शन। सही है? अच्छा, अब देखो होता है क्या है, अगर मैं इसको एक ग्राफ पे शो करूं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स को और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को हम कहते हैं इंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम। देखो इसके ना बहुत सारे नाम होते हैं, मैं सारे नाम लिख देता हूँ। इस ग्राफ को जो हम बनाने वाले हैं ना, दिस इज नोन एज इंथैल्पी प्रोफाइल diagram. It is also known as energy profile diagram. ठीक है, it is also known as reaction pathway diagram. तो सारे नाम आपने याद रखें। ये बेसिकली ग्राफ होता है जिसमें ना हम लोग एक ग्राफ पे, आपको पता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। अब प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन में क्या होगा भाई? हर केमिकल रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। हाँ, अली एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको सारे नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग नाम से मिलेगा। तो अभी जो हमारा रिसेंट सिलेबस है वो इस नाम को कह रहा है रिएक्शन पाथवे, लेकिन डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नाम मिलेंगे आपको। अभी जो करंट सिलेबस है वो रिएक्शन पाथवे डायग्राम कह रहा है 2023 वाला। बट अगेन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम मिलेंगे, तो वो परेशान नहीं होना किसी ने अलग नाम से पढ़ा हुआ है तो। अच्छा, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं इंथैल्पी। यूनिट फॉर इंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल। अच्छा, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन में क्या मतलब है कि पहले रिएक्टेंट होगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल गई है, तो हर रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे these reactants have been converted into products. अच्छा, जो रिएक्टेंट की इंथैल्पी है वो ज्यादा है, देखो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू हायर है, बट जो प्रोडक्ट की इंथैल्पी है इट इज लोअर देन द रिएक्टेंट्स इंथैल्पी। ये जो मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना रहा है। So during an exothermic reaction,
we know that enthalpy change is a negative value. The formula for enthalpy change is enthalpy of product minus enthalpy of reactants. HP is the enthalpy of product and HR is the enthalpy of reactant. ये ऊपर लिखा हुआ है ना हमने. तो ये वैल्यू देखो, अब प्रोडक्ट की इंथैल्पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे असाइन कर दूं, लेट्स से 50 किलो जूल, और रिएक्टेंट की इंथैल्पी की वैल्यू वो ज्यादा है, वाई एक्सिस पे ऊपर है, लेट्स से 80 किलो जूल पर मोल. तो प्रोडक्ट इज 50 एंड रिएक्टेंट इज 80. तो 50 माइनस 80 क्या आएगा? It will give you minus 30. When during a chemical reaction, enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product, the enthalpy change would be in negative, and such reactions are known as exothermic reactions. और इसमें हम लोग ना ये जो लेवल बनाए ना, एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, इन दोनों के बीच में इंथैल्पी चेंज को हम लोग शो करते हैं बाय दिस एरो जो डाउनवर्ड फेस कर रहा है, क्योंकि इंथैल्पी चेंज डिक्रीज हो रहा है ना. तो दिस एरो शोज दैट इंथैल्पी चेंज इज डिक्रीजिंग. और इसी डायग्राम को हम प्रोफाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो हम शेप बनाते हैं कर्व का, वो कुछ इस तरह से बनाते हैं. पहले वो ऊपर उठता है और फिर नीचे चला जाता है लाइक दिस. अब ऐसा क्यों बनाते हैं ये हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के. बट फॉर नाउ यू शुड नो, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product, and that change in enthalpy is a negative value in an exothermic reaction. And मैं समराइज करूं पूरा, ये लिख लिया यहाँ तक. पूरा नहीं लिखा. चले आगे. Yes, sir. So what's happening in an exothermic reaction, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. एक साथ सारी बातें लिख देता हूँ. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग is greater than, is less than heat release during bond making Secondly, enthalpy change of an exothermic reaction, which is del H, is a negative value. Moreover, enthalpy of reactants is greater than enthalpy of products, or
HR is greater than HP. And one more thing, during an exothermic reaction, temperature of surrounding increases. अच्छा, जिसको मैं हीट एनर्जी लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी. तो कहीं पे अगर थर्मल एनर्जी का वर्ड मिले तो हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी आर सेम. हीट एनर्जी इज ऑल्सो known as thermal energy. सही है. अच्छा, आगे बढ़े. ठीक. आगे बढ़े. ठीक. Okay. Now we'll make this energy profile diagram for endothermic reaction. In an endothermic reaction, enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant. If we use the formula for enthalpy change, this is same enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Product का enthalpy जो है वो ज्यादा होता है as compared to enthalpy of reactant. इसका जैसे ग्राफ बनाया ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एक्सिस तो इस पे भी सेम ही होंगे. On x-axis we have progress of a reaction. And on y-axis we have enthalpy in kilojoule per mole. तो पहले तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ही होंगे ना इसमें भी. And these reactants are converted into products. So in an endothermic reaction, products are at a high energy level than reactants. So products are at a high energy level than reactants. For example, let's say enthalpy of reactant जो है वो this time it is 30 kilojoules per mole and for enthalpy of product is 100 kilojoules per mole. Y axis पे ऊपर है ना product. So when we use this formula, enthalpy of product minus enthalpy of reactant to find the enthalpy change, enthalpy of product is 100 and enthalpy of reactant is 30. So the answer would be plus 70 kilojoule per mole. So in an endothermic reaction, enthalpy change is positive. We already know it. और इसमें जो हम enthalpy profile diagram में enthalpy change show करेंगे, it will be from reactant to product. मतलब arrow upward बनेगा because enthalpy change is increasing. Positive है ना, it means it is increasing. Because enthalpy is a positive value. और इसका जो energy profile diagram बनेगा, it would be something like this. सब कुछ उल्टा है, जैसे एक्सोथर्मिक में था, एंडोथर्मिक में सब कुछ उल्टा है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में
अगर हम बात करें तो हीट एनर्जी, हीट और थर्मल एनर्जी absorbed during bond breaking is greater than heat energy released during bond making. Enthalpy of product is greater than enthalpy of reactants, and enthalpy change will always be a positive value. And what about temperature of surrounding? In an exothermic reaction, temperature of surrounding increases, but in an endothermic reaction, temperature of surrounding decreases. जी, सवाल पूछो, आप कोई क्वेरी है तो। बिलाल, हिबा, मिशाल, अली, मूसा, सहर, समरा, उजैर, बच्चे की क्वेरी है तो पूछो जल्दी से। No doubts. No doubts. Are you sure? Yes, sir. जी अली, कुछ पूछ रहे हो? एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट क्लास में अली अलग से पढ़ेंगे, वो अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मर्ज नहीं किया अभी। उसकी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और फिर उसको अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास will define activation energy and start the question for this chapter. It's a very small chapter. Okay, sir. Okay. अगर कुछ सवाल नहीं पूछना है तो आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज।